Just issued a stern warning to the protesting farmers. The Delhi police have said if the farmers turn aggressive, if the farmers are aggressive, we will not be on the defensive. We have to protect ourselves and we have to push aggressive farmers back. We have to make farmers understand they cannot breach the barricades. They may sit at the border. That is for the government to see. The Delhi police have said, and I quote, use tear gas shells, cannot give them a single weak point or they will push through with their tractors. तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके ऊपर हम पहले गैस चलाएं और जरूरत पड़े तो लाठी चलाएं। कोशिश करें कि स्टन भी यूज करें और चिली वाला जो है वो भी यूज करें। उनकी पूरी एग्रेसिवनेस है तो हमें भी डिफेंसिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा जो स्टांस है वो पूरी तरह एग्रेसिव होगा। हमें अगर हम डिफेंसिव पे चलेंगे तो हम सब घायल हो जाएंगे। वो जिस जोश के साथ आ रहे हैं उससे डबल जोश हमारा होगा, तभी हम उनको रोक पाएंगे। वो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, हम पागल की तरह काम नहीं कर सकते। हमें लॉजिकली करना है, अपने आप को बचाना भी है और उनको फेल भी करना है आगे बढ़ने से। तो ये सारी चीजें जो हम लोग कमांडर्स के साथ डिस्कस की थी, इसकी जब भी वो आएंगे ये बार बार चलेगा। वो आगे बढ़ेंगे, हमें पीछे खदेड़ना है, टीयर गैस चलानी है, लाठी चलानी है, अपने आप को बचाना है। ये एक प्रोसेस चलेगा जो मुझे लगता है हो सकता है पूरे दिन चलता रहे। जिस समय उनको ये समझ में आ गया कि वो आगे दिल्ली में नहीं जा सकते, इस बैरिकेड को ब्रीच नहीं कर पाएंगे, वो बैठ जाएंगे, फिर हमें शांति हो जाएगी। बैठने से भी कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी दिन बैठे सरकार से नेगोशिएट करेंगे, वो सरकार का लुकआउट है, पॉलिसी मैटर एडमिनिस्ट्रेशन का लुकआउट। हमारा उद्देश्य है इनको रोकना है, दिल्ली में जाके ये अराजकता ना फैलाए, वायलेंस ना करे, इसलिए हमें इनको बॉर्डर पे रोकना है। और उसके लिए हम सबको एकजुट रहना है, कोई भी जवान इधर से उधर ना जाए। जब एक्शन होगा, अगर हम एकजुट होकर कंबाइंड एक्शन करेंगे, चाहे आरएएफ है, चाहे दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, सब मिलके करेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और ये लोग फेल हो जाएंगे। हमारा थोड़ा सा भी कहीं पे भी कोई भी वीक हुआ तो इनको कोई एक थोड़ा सा भी कोना मिल गया तो ये पूरे। That's a very clear message from the Delhi police. If the farmers are aggressive, if the farmers turn violent, then the Delhi police will not be on the defensive. The Delhi police say they have a very clear guide missive. The Delhi police have been told to stall the farmers, to stop the farmers at Delhi's borders. They should not enter. They can sit there peacefully, they can protest there peacefully, but if they turn violent, then the Delhi police will take retaliatory action as per law. That's the message that goes out from the Delhi police leadership to the Delhi police rank and file, that along with the Central Reserve Police Force and the Rapid Action Force have been deployed at Delhi's borders, because more than 200 farmers' unions are marching to the national capital to press the centre to accept their demand. A massive Haryana police versus protesting farmers showdown took place earlier today at the Shambhu border, and the situation remains extremely tense even now. Police had to fire tear gas shells, and these were tear gas shells that were fired from a drone to disperse the protesting farmers. A cause for concern, according to the Delhi police and the Haryana police, are these modified tractors being used by farmers to breach the barricades. We bring you more in this report. Tear gas fills the air. Fierce confrontations. Obstacles. Sharp spikes. Barbed wire barriers. And law enforcement in riot gear. Once again, farm protests erupt in India's grain bowl heartland, evoking memories of the march from Punjab and Haryana to the nation's capital on November 26, 2020. हालात यहाँ पर कहीं ना कहीं बेकाबू होते जा रहे हैं और सिचुएशन तनाव वाली बनी हुई है। लोगों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है
कि लोग भी आगे ना बढ़ें। और ये देखिए, ये जो ड्रोन आया है, इससे टीयर गैस सेल फेंके जा रहे हैं। This time around, the protests carry a different tone from the prolonged agitation of the past. In contrast to the 2020 protests against new agricultural laws, which were eventually repealed a year later. The February 2024 protests focus on long-standing grievances confronting the country's agricultural sector. देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से। एजिटेशन कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मानती। Key among the farmers' demands is the enactment of a new law ensuring a minimum support price for their crops. Despite some progress on other fronts, the impasse over the legally backed minimum support price fueled Monday's demonstrations. While the government sets minimum prices for over 20 crops annually, the Food Corporation of India primarily purchases rice and wheat at these rates, benefiting only about 6% of farmers. The government maintains that time is needed to devise a solution. मैं मानता हूं कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस बात को यदि हम समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका समाधान को अच्छे ढंग से निकाल पाएंगे। Traffic routes and border restrictions around Delhi led to extensive gridlock in the city. Behind me is what you witness is almost like a war zone because there's a consistent, oh my god, this is where a tear gas has gone on, and obviously this is almost suffocating because of the nature. And remember, this is where media is stationed, and continuously you see the farmers on one end, and this is where the farmers on one end and the Central Armed Police as well as Haryana Police on the other end. So continuously there is a back and forth stone pelting. Currently, it is Shambhu border, located approximately 230 kilometers north of Delhi, that has become the focal point of clashes between enraged farmers and authorities striving to prevent their advance towards the city. With Kamaljeet Sandhu and Satyendra Chauhan, Bureau Report, India Today.